हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि टेबल का काम जो है चालू हो चुका था और अब ये पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में हम जो है ये टेबल को 8 फीट लंबा कैसे कैसे चौड़ा बनाया जाता है, किस तरह से कटिंग करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी कटिंग करते हैं और कटिंग करने के बाद सारे पीसेस को एक बराबर में साइज़ बाय साइज़ कट कर लेते हैं और चलते हैं इसे जोड़ने के लिए। जोड़ने के लिए आप कील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्क्रू से भी काम कर सकते हैं।
जहाँ कहीं भी फेविकोल की ज़रूरत होती है फेविकोल, और जहाँ हीटेक्स की ज़रूरत होती है वहाँ हीटेक्स लगाते हैं। तो इससे काम जो है थोड़ा जल्दी हो जाता है और समय भी कम लगता है। हीटेक्स लगाने का मेन मकसद ये है कि बारिश में फेविकोल जो है वो अच्छी तरह सूख नहीं पाता है, इसके लिए हीटेक्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आप चाहे जैसे हीटेक्स या फेविकोल दोनों में से